अथ द्विषष्टितमः सर्गः। सीतामपश्यन् धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः विललापमहाबाहुर्रामः कमललोचनः। पश्यन्निव च तां सीतामपश्यन् मदनार्दितः उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुर्वचम्। त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतयां प्रिये आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्तिनी। कदलीस्कन्धसदृशौ कदल्या संवृतावुभौ ऊरू पश्यामि तौ ते विनाशि शक्ता विगूहितुं। कर्णिकारवनं भद्रे हासन्ति देवि सेवसे अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वै। परिहासेन किं सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये अयं स परिहासोऽपि साधु देवि न रोचते। विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये। आगश्च त्वं विशालाक्षि सूर्योऽयमुटजस्तव सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा कृतापि वा न हि सा विलपन्तं मामुपसम्प्रैति लक्ष्मण। एतानि मृगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण संसन्तीव हि वैदेहीं भक्षितां रजनीचरैः। हा ममार्ये क्व यातासि हा साध्विवरवर्णिनी हा सकामा त्वया देवी कैकेयी सा भविष्यति। सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः कथं नाम प्रवीक्षामि शून्यमन्तःपुरं पुनः। निर्वीर्य इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्षति कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे। निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपं कुशलं परिप्रश्यन्तं कथं शिक्षे निरीक्षितुं। विदेहराजो नूनं वां दृष्ट्वा विरहितं तया सुता स्नेहेन सन्तप्तो मोहस्य वशमेष्यति। अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालितां स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम। मामिहोत्सृज्यत् हि वने गच्छायोध्यां पुरीं शुभां न त्वकं तां विना सीतां जीवेयं कि कथञ्चन। गाढमाश्लिष्य भरतो वाचो मद्वचनात् त्वया अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्। अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथा न्यायमभिवाद्या स्ममाज्ञया रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तकारिणा। सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रकर्षना विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत् इति विलपति राघवे सुदीने वनमुपगम्य तथा विनाशुके स्यात् भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमनः भृशमातुरो बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 62तमः सर्गः।